एक्टिव पैसिव वॉइस। आई हैव ईटन एप्पल, मैं सेब खा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैड ईटन एप्पल, मैं सेब खा चुका था, पास्ट परफेक्ट। फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। स्क्रीन पर आई हैड ईटन एप्पल, मैं सेब खा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। एप्पल हैड बीन ईटन बाय मी, मेरे द्वारा सेब खाया जा चुका था, यानी कि एप्पल और एज पर फॉर्मूला हैड क्योंकि चुका था आया, यानी कि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। हैड लगाया, साथ में बीन लगाया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ईटन, इसके बाद बाय प्लस मी, जो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। एप्पल हैड बीन ईटन बाय मी, वेरी सिंपल फॉर्मूला। हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। राम हैड टेकन टी हैड बीन टेकन बाय राम। ही हैड फॉलोड माई ऑर्डर्स हैड बीन फॉलोड बाय हिम। दे हैड फ्लोन kites had been flown by them. Scientists had done research had been done by the scientists. He had done payment had been done by him. Students had solved the questions had been solved by the students. They had delivered the lectures had been delivered by them. Teacher had given the remarks had been given by the teachers. Now the topic we are about to do, this topic is not related to passive voice, but as you know that we have to do 2 topics per day. This is second topic of the day. Questions asking with the use of WH family. WH फैमिली का चैप्टर हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप जब भी किसी से मिलते हैं उससे आप विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट इज योर नेम? देखिए WH फैमिली शुरू में आई, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब। मैक्सिमम WH फैमिली शुरू में आती है और उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, साथ में हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? What's your problem? What is their mobile number? What is his address? What was your salary? What do you eat? What was the annual turnover of your company last year? What are you doing? What was she doing? What were they looking for? What will they do then? What has she done? What had she done? What did he tell you? What had she been studying for a long time? What shall I be purchasing from bazaar? What will you have taken from market? What will she have been studying since 2 o'clock? What will be the consequences?